Hello guys, I am Shubham for tutorials. This is the part 6 of the video DBT PYQs. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever the video is out. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. First question, siderophores are generally option 1 produced by bacteria only during sporulation, pore forming toxins, no. Structurally diverse ion chelating molecules, yes. Cytokines that kill bacteria. Hydrophores are actually ion chelating molecules. Next question. The technique commonly used to resolve large size DNA fragments greater than 20 kilobase pair following digestion with restriction enzyme is A. Polyacrylamide gel electrophoresis, capillary electrophoresis, pulse field gel electrophoresis, preparative HPLC. So, pulse field gel electrophoresis is the direct questions होते हैं, right? Megakaryocytes are the major source of. See, this is very easy. Megakaryocytes platelets formation होता है, right? Which of the following method is used to determine the three-dimensional structure of a protein in solution? X-ray crystallography, NMR spectroscopy, far UV circular dichroism spectroscopy, cryo-EM, electron microscopy. So basically, option number 2, NMR spectroscopy gives the three-dimensional structure of a protein in solution. Okay, techniques बहुत important है, right? डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उससे. Which among the following does not depend on nucleic acid hybridization? See, DNA microarray, it is dependent on hybridization. Chromatin precipitation, immunoprecipitation. Okay, from the name only we can understand. Immuno matlab antibodies we are using against the protein. So this is our answer. Okay, chromosome painting hybridization is used. Southern blotting hybridization is used. क्रोमोसोम पेंटिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, बट क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन अगर आपको पता है, देन ऑल्सो यू कैन इजीली मार्क. व्हाई? बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इम्यूनो टेक्निक. मतलब एक मिक्स्ड है, राइट? वी डिजाइन एंटीबॉडी अगेंस्ट अ प्रोटीन which is bind to DNA. Okay, so that is not dependent on hybridization. So this is the answer, right? Formation of pre-replicative complex, okay, renders the cell competent for replication. An event called as, okay, pre-replicative complex is related to replication, right? So proofreading activity है क्या ये? नहीं. What is proofreading? Correction, right? यहाँ पे formation of pre-replicative complex. Okay, nick translation, no. Licensing, yes. Polymerization, no. बहुत इजी है. ठीक, रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ओके, तो ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी तो नहीं है. वी नो प्रूफ रीडिंग इज करेक्शन. निक ट्रांसलेशन भी इट इज लाइक रिपेयर, राइट? निक का रिपेयर होगा. पॉलीमराइजेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तो ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है एंड लाइसेंसिंग विल बी आ करेक्ट. ओके, so this is known as elimination, right? दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. Given below are two statements. Glial cells form myelin
around the axons of neuron. Okay, this is statement 1. Statement 2 is myelin enables the rapid transmission of action potential down an axon. करेक्ट है, ये रैपिड ट्रांसमिशन होता है. इन द लाइट ऑफ अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. यस, ऑप्शन 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Both the statements are correct. Okay. Glial cells form myelin sheath and that myelin enables the rapid transmission of action potential. How many isoprene units are present in diterpene? Diterpene is basically 20 carbon. Okay. Isoprene में 5 carbon होते हैं. Right? Means 5 carbon into 4. 5 4s are 20. So option number 2 will be the answer. 4 carbon. Right? जो 5 कार्बन का है दैट इज आइसोप्रीन. ओके, आइसोप्रीन के 4 यूनिट्स हमें चाहिए टू अचीव द नंबर 20 कार्बन. सेल्स प्राइमरी प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. वी नो दिस. एनर्जी ऐसे प्रोडक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. हाउएवर most cancer cells predominantly produce the energy through a high rate of glycolysis, followed by lactic acid fermentation, even in the presence of abundant oxygen. Okay. This phenomenon is known as anaplerotic effect, no. Warger effect, yes. Warburg effect, Cantley effect, Crabtree effect. Warburg effect is the answer. कि कैंसर सेल्स में ग्लाइकोलिसिस हाई रेट से होता है. के बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट ऑक्सीजन. वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नोन एज वार्बर्ग इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? द फॉलोइंग फीचर ऑफ ADNA इज इनकरेक्ट. ADNA, BDNA, ZDNA, 3 forms of DNA. Very important. The DNA is arranged in a left-handed double helix. ये ही wrong है. And this will be the answer. If you know this basic difference, A and B DNA, these are right-handed. And जो Z DNA है, this is left-handed. Right? This is the incorrect statement. You can see option 3 है. DNA is arranged in right-handed double helix. This is correct. Right? Incorrect पूछा है. Incorrect is the first one. बाकी सब correct है. Okay? और एक तरीके यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट वी कैन डू, ये जो 1 है एंड 3 है, दिस आर अपोजिंग स्टेटमेंट. राइट? अपोजिंग स्टेटमेंट. तो कंफर्म फ्रॉम दिस 2 ऑप्शंस ओनली एक आंसर होगा. राइट? जो बाकी स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है. either the DNA is right handed or left handed of this ADNA. so you should know that A जो है that is right handed, A and B both. ZDNA is left handed.
So these were the PYQs for today. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.